हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने जा रही हूं रिगार्डिंग पीपीटीटी ग्रुप डिस्कशन। इसमें बहुत कैंडिडेट्स के मन में यह सवाल होता है दैट व्हाट आर द क्वालिटीज असेस्ड ड्यूरिंग पीपीटीटी जीडी। कौन सी क्वालिटीज हमारे अंदर जो है असेसर्स असेस करते हैं, ये इवेलुएट करते हैं। सो दैट ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको जानने के लिए भी, क्योंकि you will be able to improve on those qualities if you really know on which qualities you will be assessed or evaluated during PPTT group discussion. तो आइए बात करते हैं कौन से वो क्वालिटीज हैं और उनको improve आपको कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कम्युनिकेशन स्किल। आपको पता है जीडी में सबसे इंपॉर्टेंट होती है कम्युनिकेशन ऑब्वियसली। तो आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उनको इंप्रूव करना है या उनके थ्रू आपको जीडी में पार्टिसिपेट करना है। Candidates will be evaluated on their ability to express thoughts clearly, articulate ideas and actively participate in the conversation. So maximum participation आपको देनी है जीडी में ताकि communication skills जो है वो आपके assessors बहुत आसानी से आपके अंदर assess कर पाए। नेक्स्ट इज लीडरशिप पोटेंशियल। सो ग्रुप डिस्कशन में एवरीबडी इज इक्वल। तो आप बोलोगे मैम कैसे लीडरशिप पोटेंशियल इनको पता चलता है। सो ऑब्वियसली द असेसर्स विल लुक फॉर सम इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ लीडर, अ प्रोबेबल लीडर। सो दे विल ऑब्जर्व हाउ अ कैंडिडेट इज स्टार्टिंग द डिस्कशन, how the candidate is guiding the group towards a consensus or a common group conclusion, and in that way they will be trying to evaluate your leadership qualities which will help in influencing the collective decision making process. तो leadership qualities आपके अंदर भी assess करते हैं assessors. Next is teamwork and collaboration. Again, this is a group discussion, so group is of ultimate priority here. तो यहाँ पे आपकी टीम वर्क, आपकी ग्रुप डायनामिक्स को टेस्ट किया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी या ट्रेट होती है इन एन आर्मी और नेवी और एन एयरफोर्स ऑफिसर। एंड पीपीटीटी जीडी इज द बेस्ट वे इन विच द असेसर्स असेस दिस क्वालिटी ऑफ योर्स. So you will be evaluated on the basis of how actively you are collaborating with others, how you are listening to others' opinions, and how you are contributing constructively to the group's decisions, conclusions, and dynamics. नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल स्किल। इसका मतलब है दैट हाउ यू आर इंटरेक्टिंग विथ योर पीयर्स, how you're demonstrating diplomacy, how you're showing empathy, and how you're building rapport within the group. So ये चीजें भी, this is also part of your group dynamics, but it also shows your interpersonal skills. Next is analytical and critical thinking. This is again important. How or what kind of points you are giving. इसके थ्रू भी assessors को समझ आते हैं कि आपने कितने अच्छे से पिक्चर को एनालाइज किया है, कितने अच्छे से ऑब्जर्व किया है. On the basis of all this, how you have written a story, how you are putting the points, and how you are using your critical thinking to come to a common group conclusion. So you will be expected to offer insightful perspective, identify key elements in the picture, and contribute meaningfully to the discussion. Next is adaptability and flexibility. Again, very important two positive traits that an officer should have. And military environments are quite dynamic, as you all know. So it will require people who adapt very swiftly to all the changing situation. So PPTT GD में भी the way you are participating, इसके थ्रू भी assessors assess कर लेते हैं आपकी adaptability और flexibility by observing how you respond to evolve discussion points and incorporate new ideas, whether you are open to others' ideas, whether you are open-minded, whether you are taking them and accepting them, and not only that, you are also using your own points in order to make it a very constructive story. Next is decision making skill. Again, very important trait of an officer, right, in the armed forces. So decision making scenarios में आप कैसे real life situation को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ रहे हो, how you are making informed decisions, how you are weighing pros and cons of the situation, and how you are guiding the group towards a logical solution or a conclusion based on it. All these will also be observed by your assessors, and they will be able to evaluate your decision making skill through these. नेक्स्ट इज असर्टिवनेस विदाउट अग्रेशन। किस तरह आप अपने पॉइंट्स को पॉजिटिवली कन्विंस करवा पा रहे हो अपने ग्रुप में विदाउट डोमिनेटिंग. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव क्वालिटी दैट दे लुक फॉर इन ऑल द कैंडिडेट्स इन PPTT GD. So the candidates will be evaluated on their ability to convince or assert their opinion without taking resort to aggression or to violence or dominating the discussion. That is very important. Next is time management. This is important again. कैसे होता है time management? That you are given a chance to speak. It should not happen that you are taking that chance and advantage and giving a lecture on it. So you have to participate in a constructive and a positive way. आपको बाकी लोगों को भी time देना है
और खुद के पॉइंट्स भी आगे रखने हैं. So this managing the time efficiently, managing the scenarios efficiently, this is also tested by the assessor. So you are expected to contribute meaningfully without monopolizing the discussion or just revolving the discussion around what you are saying only. This will showcase your understanding of time management and constraint and how you are also letting others to speak in that time frame. Next is problem solving abilities. Again, this is a very important ability that the assessors look for in the candidates during PPDT GD. The candidates will be assessed on the basis of how they approach the challenges, how they contribute to solution on the basis of real life scenarios and how they are engaging in collaborative problem solving. मिलके कैसे वो problem को solve कर रहे हैं या फिर उनका क्या ideas है. So if you are a very creative individual in the sense that you have a lot of ideas in your head, you can be very well put your own points here and it will really showcase your problem solving abilities and your decision making skill to the assessors. So I hope आपको पता लग गया है PPDT GD में कौन सी qualities आपको कैसे assess किया जाता है. So next time you are participating in any GD, practicing any GD for PPDT, or you are also going for your next SSB interview and you're participating in PPDT group discussion, make sure that you are taking care of these qualities so that you are not making a mistake and the assessors can assess your qualities through these aspects. So अगर आपको ऐसे guidance या tips की जरूरत है for your upcoming SSB interview, you can stay tuned with us and get yourself enrolled to SSB interview online course जिसमें हम regular live classes भी provide करते हैं so that you can get good guidance from our mentors. इसके साथ साथ we have also provided written defense exam के related courses. If you are preparing for any of them, you can get yourself enrolled in it. While enrollment, use the code warrior10 जिससे आपको 10% का discount आराम से मिल सके किसी भी course में. So I'll see you next with something more helpful for your upcoming SSB like today's session. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. जय हिंद. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.